हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम कंडीशंस ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पर MCQ सॉल्व करेंगे। चलिए MCQ शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट MCQ है, इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज आर प्रोवाइडेड अंडर। आपके ऑप्शंस हैं A अंडर सेक्शन 5, B अंडर सेक्शन 6, C अंडर सेक्शन 7, D अंडर सेक्शन 8, E अंडर सेक्शन 9। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 a marriage may be solemnized between two Hindus if A. neither party has a spouse living at the time of marriage, B. neither party is incapable of giving a valid consent to it in consequences of unsoundness of mind, C. the parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits of marriage between the two, D. the parties are not spinda of each other unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two, E. all of the above। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेक्शन 5(1) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स A. bigamous marriage, B. age of the parties to the marriage, C. mental capacity of the parties to the marriage, D. spinda relationship, E. prohibited relationship। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, बिगमी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड्स A. polygamy, B. polyandry, C. monogamy, D. both A and B, E. only C। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, द ऑफेंस ऑफ बिगमी इज कमिटेड इफ A. the subsisting marriage is null and void, B. the subsisting marriage is not null and void, C. the subsisting marriage is voidable and no court's decree of annulment has been obtained, D. both B and C, E. only A। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, a party is regarded as not having the mental capacity to solemnize the marriage if suffering from A. unsoundness of mind, B. mental disorder, C. insanity or epilepsy, D. all of the above। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट द मिनिमम एज फॉर अ मैरिज इज A. for bridegroom 18 years and for bride 21 years, B. for bridegroom 21 years and for bride 18 years, C. for bridegroom and the bride are of the age of 18 years at the time of marriage, D. both bridegroom and the bride are of the age of 21 years at the time of marriage, E. no minimum age for marriage is prescribed under this act। Question number 8 है, which of the following act has raised the minimum age of marriage for boys to 21 and girls 18 years? A. Hindu Marriage Act, B. Child Marriage Restraint Act, C. Special Marriage Act, या D. Indian Divorce Act। Your ninth question is, spinda relationship has been defined under A. Section 2B of HMA, B. Section 2D of HMA, C. Section 2E of HMA, D. Section 2F of HMA, E. Section 2G of HMA। आपका 10th क्वेश्चन है, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट द स्पिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड्स to the line of ascent to A. 2 degrees through the mother and 3 degrees through the father, B. 3 degrees through the mother and 4 degrees through the father, C. 3 degrees through the mother and 5 degrees through the father, D. 5 degrees through the mother and 7 degrees through the father, E. 4 degrees through the mother and 6 degrees through the father। आपका 11th क्वेश्चन है, prohibited relationship has been provided under A. section 2B of HMA, B. section 2D of HMA, C. section 2E of HMA, D. section 2F of HMA, E. section 2G of HMA। Question number 12 is, degrees of prohibited relationship include relationship by A. full blood, B. half or uterine blood, C. adoption, D. legitimate as well as illegitimate blood relationship, E. all of the above। Question number 13 is, a marriage under the Hindu Marriage Act 1955 between two persons who are related to each other within the degrees of prohibited relationship shall be A. valid, B. void, C. voidable, D. irregular। आज के MCQ सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा अटेंटिव होइएगा। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, in case of bigamous marriage the second wife has no status of wife as the second marriage during the lifetime of first spouse is null and void। 2. second marriage can be proved by mere admission of the parties। 3. a child marriage is void under the Special Marriage Act 1954। 4th, to make a marriage voidable on account of lack of mental capacity, the mental capacity should relate to post-marriage mental conditions।
फिफ्थ, स्पेंडर रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ओवरलैप ईच अदर। आपके ऑप्शंस है 1, 3, 5, B 2 and 3, C 1 and 3, D 2 and 4, E 4 and 5। ये थे आपके आज के MCQs। अगर आपको इन MCQs के आंसर की और PDF चाहिए और मॉडल आंसर की PDF चाहिए और GS और इंग्लिश की PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप पेज और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।